was deformation response factor in undamped system subjected to harmonic vibrations. ये जरा कंफर्म करें कि हम कहाँ तक पहुंचे थे. CR या कोई और स्टूडेंट जरा लास्ट टाइम आखिरी टॉपिक हमने कौन सा किया था? यही किया था. ठीक. Deformation response factor. This was the last topic we discussed in the previous class. And deformation response factor, which is mathematically represented by RD, is basically the ratio of peak dynamic displacement divided by static deformation. And static deformation is defined as the maximum displacement that will occur in a system when the dynamic force is applied very slowly, or dynamic force is applied as a static force. So this ratio, that is deformation response factor, shows by which amount the dynamic displacement amplify with the change in frequency ratio. And we discussed this plot between frequency ratio and deformation response factor, which shows that when frequency ratio is not very high, in the vicinity of 0.2, RD is approximately 1 or slightly higher than 1, which shows that for low values of frequency ratios, dynamic displacement and static deformations are almost equal. And after that, RD increases rapidly with the increase in frequency ratio. And at frequency ratio equal to 1, it becomes infinite. And due to the resonance, and after the resonance, the RD again start decreasing. Now coming to the phase angle, we discussed last time हमने फेज एंगल की टर्मिनोलॉजी सिर्फ पढ़ी थी, उस पर डिस्कशन नहीं की थी. Basically, phase angle is the amount by which a response lags the applied force. As we discussed last time, that when frequency ratio is less than 1, dynamic displacement and corresponding the dynamic force and the corresponding dynamic displacement occur simultaneously in the same direction, and we say that the motion is in phase. But if frequency ratio exceeds 1, dynamic force and corresponding dynamic displacement occur in direction opposite to each other, and we say that the motion is out of phase. Phase, the
amount by which the response lack the applied force. And for undamped system with frequency ratio less than 1, phi is 0. For frequency ratio greater than 1, phi is 180 degree. Now this is the lag in terms of angle, which is difficult to understand and visualize. Therefore, it is more better if we represent this angle, if we convert this angle in time. So we have the relation omega t is equal to phi, or t is equal to phi by omega. And as you know that omega is equal to 2 pi by t, so t can be written as pi by 2 pi, phi by 2 pi into t. So this shows that when the frequency ratio is less than 1, phi is 0 and t will be how much? T will be 0, which shows that harmonic force and the displacement occur at the same time. But when frequency ratio exceeds 1, phi is 180 degree, and this time is how much? 180 degree divided by 2 pi into t. 180 degree is equal to pi radians. So small t will be equal to pi divided by 2 pi into t, or t by 2, which shows that in case of undamped system, when the frequency ratio exceeds 1, the harmonic force, the dynamic displacement corresponding to a harmonic force occur after a time t by 2 seconds, where t is the forcing time period. That is time required by the harmonic force to complete its one cycle. So now we will wind up undamped systems by solving a problem. In this problem, a video camera which is mounted on the top of a building for surveillance purpose, for security reasons, and it is attached to a hollow aluminum rod. It is attached to the free end of a hollow aluminum rod. The other end of aluminum rod is attached on the building top. The height of tube is 0.5 meter and it is subjected to a wind which varies sinusoidally and can be represented by equation P naught sine omega t. The wind-induced forces acting on the video camera is represented by P of t equal to 25 sine 25 sine 75 t, where P is in Newton. Now, due to this wind force, dynamic displacement, since the wind is a dynamic force, dynamic displacement will produce, and it is required to limit this dynamic force, the dynamic displacement, to 0.005 मीटर, क्योंकि अगर ये डायनामिक डिस्प्लेसमेंट विंड की वजह से बहुत ज्यादा होंगी तो कैमरा जो है वो अपना प्रॉपर
काम नहीं करेगा। लिहाजा हम डायनामिक डिस्प्लेसमेंट को 0.005 मीटर से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहते। Now, for this condition, it is required to find the cross-sectional dimensions of this hollow aluminum rod. The E for aluminum is 71 Pascal. So first step is to write the data embedded in the problem, which is mass of the camera 2 kilogram and the maximum amplitude of steady state vibration UP naught is 0.005 meter. E is also reproduced, and this harmonic force is also reproduced. Now when we compare this with standard expression for harmonic force, which is P of t is equal to P naught sine omega t, then from 1 to 1 correspondence, this P naught is equal to 25 Newton, and this omega is 75 radian per second. Now we are in a position to solve the problem. In last lecture, an expression was developed for calculating steady state vibrations in undamped system, which is UP of t is equal to P naught by k into 1 by 1 minus r omega square sine omega t. Our peak value of this will be 1 when sine omega t is 1. Therefore, peak amplitude of steady state vibration is P naught by k into 1 by 1 minus r omega square. UP naught is provided, P naught is given, and but k and r omega need to be calculated. So r omega frequency ratio is represented by omega n. Omega n is under root k over m. Omega frequency of the force is also given 75 radian per second. Mass is 2 kg. So we finally get this expression for r omega. If we substitute this value of r omega in equation 1, we have this equation which can be simplified to find the value of k, which comes out to be 16,254 Newton per meter. So the stiffness required to limit the steady state vibration is 16,254 Newton per meter. Now, since we want to find the cross-sectional dimension, so we need to write the equation of stiffness for this aluminium tube. तो जरा आप ये बताएं, जो एल्यूमिनियम ट्यूब है जो कि एक एंड पे फ्री है, दूसरे एंड पर बिल्डिंग की टॉप एंड पर फिक्स्ड है, इसकी स्टिफनेस किसके बराबर होगी? थ्री EI over L cube. So writing stiffness equation,
we have E, we have L 0.5 meter, only unknown is I, which can be calculated, and this shows that I shall be greater than or at least equal to 9.54 into 10 raised to power minus 9 meter 4 to limit the steady state displacement to 0.005 meter. Since the tube is hollow and neither thickness is given nor any inner or outer diameter is given, so we cannot proceed further. And यहाँ पर जो है हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. चलिए. So now we are in a position to discuss the response of damped systems when they are subjected to harmonic forces. So as usual, we will write the general equation of motion for damped systems. And since the force is harmonic, so P of t will be replaced by P naught sin omega t. And again, this type of differential equation have two parts. One part of the solution is particular solution and the second one is complementary solution. And the particular solution for this equation is of this type, in which C and D are given below. C and D in this equation can be calculated by the equations provided below. Similarly, the complementary solution is also produced here, which have this which is of this type. And complete solution, which will be sum of the complementary and particular solution, is also reproduced here. Now, on this slide, we want to discuss an important phenomena. In order to understand, and the phenomena is that in case of damped systems which are subjected to harmonic forces, the
Total response, which is the sum of complementary solution and particular solution, which are the total response, which is the sum of transient displacement due to transient vibration plus displacement due to steady state vibration, is almost equal to steady state response or displacement due to steady state vibration after some time. So in order to illustrate this phenomena, we have developed graph for total response and steady state response for a system whose frequency ratio is 0.2, damping ratio is 0.05, displacement at the start of free vibration and velocity at the start of free vibration given by this equation. Now you can see that initially the difference between the total response, which is represented by the solid line, and the steady state response, which is represented by this dotted line, is significant. आप ये देखें, ये solid line जो total response है, dotted line जो steady state response, दोनों में difference जो है शुरू में है, बल्कि काफी difference है. इस पॉइंट की पीक में देखें और इसकी पीक देखें. लेकिन with the passage of time इस डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ता है, ये जरा कोई पता है? ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम टोटल स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स डोमिनेट कर रहा है. चलिए ठीक है, और कोई इसकी और मजीद अगर एक्सप्लेनेशन इसकी कोई करना चाहे. With the passage of time, total response और steady state response में फर्क बढ़ रहा है, कम हो रहा है या खत्म हो गया है? You can see that after some time, after some cycles, in this case, after almost one cycle, both the curves overlap each other, which shows that total response and steady state response becomes equal. लिहाजा अगर आप डैम्प सिस्टम में कुछ टाइम के बाद, एक या डेढ़ या दो साइकिल्स के बाद, जो कि डिपेंड करता है डैम्पिंग रेशियो और इनिशियल कंडीशन पर, स्टेडी स्टेट रिस्पांस मालूम कर लें, तो चूंकि टोटल रिस्पांस भी उसी के बराबर होगा, तो आपको टोटल रिस्पांस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि टोटल रिस्पांस जो है वो स्टेडी स्टेट रिस्पांस के बराबर होगा. So in coming slide, whenever it is required to calculate the total response, we will just calculate the steady state response और उसको हम total response के बराबर ले लेंगे. So in this lecture, in this slide, we will discuss once again we will discuss deformation response factor, but in undamped systems. In damped systems, sorry. So the steady state response, which can be written in this form, UP of t is equal to UST naught into RD into sine omega t minus phi. In this equation, U naught is the peak value of total response or peak dynamic displacement,
and it can be derived that this can be determined by c square plus d square under the root, where c and d are given on slide number 23. Similarly, phase angle can also be calculated by using those values of C and D. Now, if we substitute the value of C and D provided on slide number 22 in the equation for calculating deformation response factor, and then we simplify, we finally get this equation. तो डैम्ड सिस्टम के लिए आप डिफॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं. अगर सिस्टम अनडैम्ड है तो इसमें आप जीटा 0 पुट कर लें और इसके पुट करने से वही इक्वेशन आएगी जो कि आपने अनडैम्ड सिस्टम के लिए आप देख चुके हैं ऑलरेडी. So now deformation response factor depends upon frequency ratio as well as damping ratio. Here deformation response factor graphs between frequency ratio and deformation response factor is plotted, and since now damping ratio is also a variable, so graphs are plotted for various values of damping ratios. This one is for 0.01 damping ratio, this is for 0.1 or 10%, this is for 0.2 or 20%. Now you can see when the frequency ratio is not too high, इस रेंज में अगर आप देखें, इस रेंज में ये जो मैं सर्कल, तो जब फ्रीक्वेंसी रेशियो बहुत ज्यादा ना हो तो डिफॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर जो है उसकी क्या वैल्यू होगी? जवाब दें इसका. What will be the value of deformation response factor for different damped system if the frequency ratio is not too high, say less than 0.2? Sir, 1. It will be equal to 1. और आप देखें चाहे डैम्पिंग रेशियो 0.01 है या 0.1 है या 0.2 है या 0.7 है, लेकिन तमाम के लिए RD जो है वो approximately 1 के बराबर है. So you can say that for small values of frequency ratio, RD is approximately 1 and it is not affected by damping. However, when the frequency ratio increases, then you can see deformation response factors start increasing. And at resonance, it have peak values. And you can see that the peak value of RD, which is at resonance, depends upon damping ratio. Greater the value of damping ratio, smaller will be the peak value of RD, which is at resonance. Damping ratio जितनी बढ़ाएंगे, RD की वैल्यू उतनी कम होगी और उसकी कॉमन सेंस भी अगर आप अप्लाई करें तो डैम्पिंग की वजह से चूंकि एनर्जी डिसिपेट होगी तो डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होंगी और RD जो है वो उसकी वैल्यू भी जो है वो इफेक्ट होगी.
but after resonance RD again start decreasing. रेजोनेंस के बाद आरडी कम होना शुरू हो जाता है, और अगर आप यहां देखें कि ये इस रेंज में तकरीबन यहां पर फ्रीक्वेंसी रेशियो की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 2.5. when frequency ratio is 2.5 or high, आप क्या कंक्लूड करते हैं? अगर फ्रीक्वेंसी रेशियो 2.5 थी या इससे बढ़ जाती है तो आर डी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? तकरीबन 0 हो जाएगी सर, कांस्टेंट हो जाएगी, या उससे बेहतर अगर लफ्ज में इस्तेमाल करूं तो ये है कि आर डी जो है ये अब डैम्पिंग रेशियो पे डिपेंड नहीं करेगा. अब देखें आप तमाम डैम्पिंग रेशियो वाली कर्व्स यहाँ पर मिल रही हैं, तो जब फ्रीक्वेंसी रेशियो बहुत ज्यादा हो अगेन आर डी बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ डैम्पिंग रेशियो. चाहे डैम्पिंग रेशियो 0.01 है, 0.1 है, 0.2 है, 0.7 है, तमाम के लिए आर डी की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आ रही है. तो ये चंद ऑब्जर्वेशन है, इसको यहां पर मैंने जुबानी जो मैंने एक्सप्लेनेशन की हो यहाँ रिटर्न फॉर्म में, और जो इक्वेशंस हैं जिसकी वो भी प्रोवाइड की गई हैं. रेजोनेंस की स्टेज पे आर ओमेगा जो है जब आर ओमेगा 1 के बराबर होगा तो उस स्टेज पे आप देखें आर डी जो है, अगर आर ओमेगा आप 1 पुट कर दें तो आ जाएगा 1/2 जीटा, which shows that at for frequency ratio equal to 1, the formation response factor can simply be calculated by 1/2 zeta. यहाँ सिंपली वो इक्वेशंस रिप्रोड्यूस की गई. अगर आप कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं. अच्छा आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली फेज एंगल इज, आपने यहां पर देखा कि फेज एंगल जो है ना ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन जीटा. Similarly, we can calculate phase angle and we can convert it into corresponding time. So this graph shows that when frequency ratio is 1.5, damping ratio is 1.1, the T is 0.463 by T. If I explain it further, let the T, which is the forcing time period, that is the time required by the harmonic force to complete one cycle, is 1 second. अगर आप T 1 सेकेंड ले लें, एक हार्मोनिक फोर्स एक साइकिल जो है 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है. This small t will be equal to 0.463 second, which indicate that for frequency ratio equal to 1.5 and damping ratio equal to 0.1, dynamic force and the corresponding dynamic displacement will lag by 0.463 second. यानी डायनामिक फोर्स और उसकी वजह से जो पीक डिस्प्लेसमेंट है वो एट अ टाइम प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि जब डायनामिक फोर्स अप्लाई हो जाए उसके बाद 0.463 सेकंड के बाद प्रोड्यूस होंगे. तो ये चंद एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते.
Now coming to the resonant frequency. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आर डी की पीक वैल्यू जो है ये आर ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर नहीं आ रही है हमारे पास। दोबारा आप देखें आर डी की जो ये पीक वैल्यू है ये हमारे पास आर ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर नहीं आ रही है, बल्कि आर ओमेगा इक्वल टू 1 से थोड़ी कम वैल्यू पर आ रही है, यहां पर आ रही है। यहां पर भी आप देखें तो ये पीक वैल्यू आर ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर नहीं है, बल्कि थोड़ी सी कम छोटी वैल्यू पर है। तो resonant frequency basically that is the frequency at which we get the peak response or at which the deformation response factor have peak value। और यहाँ पर हम चूंकि डिफॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ये पहली इक्वेशन पे आप एम्फसाइज करें, डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय ओमेगा n into 1 minus 2 zeta square। जब अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, वरना फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Okay, so we have a simply supported beam and a machine, rotating machine whose mass is 100 kg is attached or anchored to the beam. Length of beam is 5 meter and it is made of mild steel whose modulus of elasticity is 207 gigapascal. Now, when this machine is running at a speed of 300 revolutions per minute, when this machine is rotating at a speed of 300 revolutions per minute, यानी कि 1 मिनट में ये 300 revolutions complete करती है, at that situation an unbalanced harmonic force of amplitude 100 Newton force is produced on the beam, and which causes maximum steady state displacement of 20 millimeter in vertical direction। यानी ये मशीन जब 300 आरपीएम के साथ रोटेट कर रही होती है तो 100 न्यूटन हार्मोनिक फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, जो कि 20 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगी। अब हमने मालूम ये करना है कि if resonance occur in this beam, that is frequency will be equal to resonant frequency, तो उस सिचुएशन में ये बीम बेंडिंग या फ्लेक्चर में सेफ होगी या नहीं। And assume maximum permissible stress in bending is 125 megapascal. Consider damping effect and ignore self weight of beam in calculations. तो अगर रेजोनेंस की स्टेज पर हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस 207 गीगापास्कल से ज्यादा आता है, ये 125 मेगापास्कल से ज्यादा आता है, तो इसका मतलब ये कि बीम सेफ नहीं है। अगर इसके बराबर आता है या कम आता है तो इट विल बी सेफ। So writing these informations in mathematical form: mass of machine 100 kg, peak harmonic force
is 100 Newton. The corresponding dynamic displacement is 20 mm or 0.02 meter. And angular velocity is 300 revolution per minute. One revolution is 2 pi radian, 1 minute is 60 seconds. So in radian per second it will be 10 pi. Now the expression for displacement resonant frequency is omega is equal to omega n into 1 minus zeta square. Omega was just calculated. Omega n is under root k over m. M is given but k is not. Again, zeta is not known. So we have two unknowns. And this equation cannot be solved because two unknowns require two equations. Therefore, we need to develop another equation. So another equation can be developed by writing the expression for steady state displacements. अच्छा बाल ये इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन है. तो दूसरी अगर हम स्टेडी स्टेट डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लिख लें तो इन डैम्प्ड सिस्टम static deformation at resonance is u naught by u(t) naught, which can be sorry, this is not at resonance. This is static deformation for deformation response factor for damped system. U naught is peak dynamic displacement, and as I told you, in damped system after very few cycles, the steady state displacement and total displacement becomes equal. So this UP naught, जो UP naught की जो वैल्यू है वो आप U naught के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. UST naught is P naught by K. Now we know that omega by omega n is equal to R omega, and which is 1 minus 2 zeta square from equation 1. So if you replace R omega with 1 minus 2 zeta square under root and then simplify this, insert the values which we have already calculated are given in the problem, we arrive at this equation. Further simplification result in this equation. So now we have two equations and two unknowns, so we can solve this problem. And if we reproduced equation 2 and write this value of k in this equation, and then we simplify, expand and simplify the equation, we will get this equation. Replacing zeta square with x will result in this form, and if we expand this equation, we get a quadratic equation which will have two roots. Now x is basically zeta square. So zeta square have two values. The first one is not acceptable because this system is not critically damped system, and we will use the second value, which is 0.00064. Our zeta is 2.52%.
Once we find zeta, we can find the value of k. Once we find the value of k, we can find the equivalent static force corresponding to the unbalanced harmonic force. ये जो unbalanced harmonic force जो है इसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्स हम मालूम कर सकते हैं अगर हम इसको यू नॉट से मल्टीप्लाई कर लें। यू नॉट हमें पता है तो एफ एस नॉट जो है 1985 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, आप जरा अब ये बताएं, ये जो बीम है अगर इसमें हम सेल्फ वेट इग्नोर कर दें, मेरी बात को गौर से सुने, जवाब दें, बीम जो है इसका सेल्फ वेट इग्नोर कर दें तो इस पर टोटल स्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगी? जवाब दें भाई। मैं फिर हर एक स्टूडेंट से पूछता हूं। अच्छा, आफाक अहमद पारा, आप जवाब दें इसका। एब्सेंट। अब्दुल मुस्तफिज। ठीक है, सेल्फ वेट अगर नहीं तो इसके बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर मशीन के चूंकि वेट है वो तो एक्ट कर रहा है तो हम मशीन का वेट इसके साथ ऐड कर देंगे। मशीन का जो मास है वो 100 kg है तो इससे हम वेट मालूम कर लेंगे, वो इसके साथ ऐड कर लेंगे और अब हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं विच इन सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ पॉइंट लोड एट द सेंटर PL/4 के बराबर है और इस बेंडिंग मोमेंट से हम बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब मसला क्या है कि बेंडिंग फ्लेक्चर फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास आपको y और I की जरूरत है जो कि मालूम नहीं है हमें। अलबत्ता ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है, सिंपली सपोर्टेड स्टील बीम विद अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो लिहाजा विड्थ और डेप्थ जो है वो दोनों इक्वल होंगी। अलबत्ता वी हैव कैलकुलेटेड द स्टिफनेस अभी हमने कैलकुलेट की है जो कि 99238 न्यूटन पर मीटर आ रही है। तो simply supported beam with a point load acting at the center have a stiffness equal to 48 EI over LQ। तो इस इक्वेशन से हम I की वैल्यू मालूम कर सकते हैं which is equal to 1.248 into 10 raised to power minus 4 meter 4, and from I we can calculate the cross sectional dimension. Since the section is square, B will be equal to H, if B is equal to H, BH cube by 12 will be H4 by 12,
From that, h is equal to 0.0622 meter. And now we are in a position as we have I as well as y max, we can calculate the maximum bending stress, which comes out to be 92.38 megapascal, which is less than the permissible bending stress, 125 megapascal. So the beam is safe at resonance. The same problem can be solved by a shortcut method. When the damping ratio is not too high, displacement resonant frequency omega is equal to omega n, and R omega is almost equal to 1. So if we use this shortcut method, वही प्रोसीजर आप रिपीट करें पीछे जो आपने किया है. But now you just take omega is equal to omega R omega जो है omega is equal to omega n ले लें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें तो आप जो है आंसर जो है तकरीबन वही आएगा. You can see K जो है वो ऑलमोस्ट वही वैल्यू आ रही है. तो ये शॉर्टकट मेथड है. आपका कोई सवाल है तो पूछे. अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं है तो वी विल टेक अ 20-minute ब्रेक और इसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे. नंबर ऑफ साइकिल्स required by a harmonic force to produce peak dynamic displacement. तो एक तो ये बात आप full resonance does not occur in a single cycle. बल्कि it takes a number of cycles to develop complete resonance or full resonance, and the equations are available with the help of which we can find the number of cycles for development of full resonance. With the help of this equation, we can find the peak displacement after J cycles of vibration. J is any number. For undamped system, Uj is displacement after J cycle, U naught is displacement at resonance. This can be, Uj can be determined with the help of this equation, provided we have the damping ratio of the system. This equation is plotted for different values of damping ratio on the next slide. Equation is plotted for 0.02 damping ratio, this dark blue. The red one is for 0.05 or 5% damping ratio, and this blue color solid line is
for damping ratio of 0.1. So you can see that for full resonance, in case of system with a damping ratio of 0.1, full resonance occur in how many cycles? This is Uj by U naught is 1 for full resonance. This occur after around 9 cycles. For 5% damp ratio, this develop in 20 cycles. So lighter the smaller the damping ratio, more will be the number of cycles required for the development of full resonance, and we can find displacement after any number of cycles with the help of equation provided on the previous slide. So solving a problem which is related to this topic, we will consider the rotating machine of problem 5.2, and it is given that speed of rotating machine is in problem 5.2 is so adjusted that it exceeds resonant frequency after completing 5 revolutions. Usually the speed of rotating machine is adjusted in such a way that at resonant frequency it does not complete too much cycles, because more cycles it complete at resonance, more displacement will produce. So in this case, the speed of machine is so adjusted that it exceeds resonant frequency after completing 5 revolutions. Now for this condition, what will be the amplitude of dynamic displacement and static force for design? We can use this equation to determine the number of cycles. Displacement, we can find the displacement at resonance after j cycles, and it shows that when resonance occur and machine complete 5 revolution, the dynamic displacement is 10.97 millimeter, whereas displacement for full resonance is 20 millimeter. तो अगर हम किसी मशीन की स्पीड इससे एडजस्ट कर ले कि रेजोनेंस जैसे ही डेवलप हो, ज्यादा साइकिल्स कंप्लीट ना करे, मशीन की स्पीड बढ़ जाए, तो उससे ये फायदा होगा कि फुल रेजोनेंस डेवलप नहीं होगा। यहाँ पर हमने मशीन की स्पीड इससे एडजस्ट की है कि रेजोनेंस की स्टेज पे से 5 साइकिल्स कंप्लीट किए, इसके बाद रेजोनेंस क्रॉस कर लिया। फायदा क्या हुआ है आप देखें कि फुल रेजोनेंस अगर डेवलप होने देते हम तो 20 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती, अब जो है 10.97 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही। कॉन्सिक्वेंटली जो स्टैटिक फोर्स है वो भी कम होगी और डिजाइन जो है वो इकोनॉमिकल होगा। So in this case, the equivalent static force will be K into U naught 1092 Newton. अच्छा, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए। ये एक्सरसाइज है जो कि आप की प्रैक्टिस के लिए आपका जो मिड टर्म एग्जाम है मॉड्यूल 4 तक होगा, तो मॉड्यूल 4 तक आप मिड टर्म के लिए तैयार कर लें। ये एक्सरसाइज आप मिड टर्म के बाद भी कर सकते हैं। वाइब्रेशन आइसोलेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाइब्रेशन आइसोलेशन।
अच्छा, ऐसा है कि sometime due to cause जो किसी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको हम सिर्फ उसी पोर्शन तक आइसोलेट करना चाहते हैं या उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, लेकिन इस फिनोमिना को जो है वाइब्रेशन आइसोलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाज़ औक़ात मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की जो रूफ है उस पर एयर कंडीशनिंग प्लांट इंस्टॉल्ड होता है, which may cause significant vibration, और उसको अगर हम आइसोलेट नहीं करते तो वो वाइब्रेशंस जो हैं तो पूरी बिल्डिंग में एक लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो इस सिचुएशन में हम उस वाइब्रेशन को जो है वहीं पे ही कुछ तरीकों से रिड्यूस कर देते हैं ताकि बाकी जो बिल्डिंग्स है उसमें वो लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस ना हो। इसी तरह बाज़ औक़ात बाज़ इक्विपमेंट्स जो होते हैं, दीज आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस, तो वो इंस्ट्रूमेंट जहां पर इंस्टॉल्ड होते हैं वहां पे फिर हम इसका अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जो सराउंडिंग से जो वाइब्रेशन है वो उन इंस्ट्रूमेंट्स तक या तो पहुंचे ना, या अगर पहुंचती भी है तो काफी उसकी इंटेंसिटी कम हो। तो वो मशीन विच आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशन, दीज इंक्लूड्स surgical microscopes, electronic equipment, lasers, MRI units, scanning electron microscopes, computer disk drives. So जहाँ पर ये चीजें मौजूद हो, we need to isolate the vibration from the surrounding. We need to isolate it from the vibration from the surrounding. So these are various types of arrangement which are used to reduce the vibration. One is metallic spring. This is usually installed at the foundation of the machine which can produce vibration and can transmit it to the surrounding. These are isolation pads. One of the example all of you have seen in the bridges, that below the bridge deck and between the bridge pier, rubber layers, special type of rubber layers are provided. These rubber layers basically reduce the dynamic force transmitted from the superstructure to the substructure. And there are similar other arrangements which are used at various locations. And usually there are some material which are cheap but quite effective in reducing the vibration. One of them is rubber. Natural rubber also have a very good property, but artificial rubber can also be produced. And this type of इस किस्म के एक कपड़ा सा आपने देखा होगा, इसको फेल्ट कहा जाता है। कार्क पैड्स, these are materials which are used for reducing the vibration. Here an example of the metallic spring is given to reduce the vibration produced in
वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन। यहाँ पर एक मशीन के नीचे ये जो स्प्रिंग लगाए गए हैं, तो ये स्प्रिंग जो है इसकी स्टिफनेस, ये स्टिफनेस काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली मशीन ऑपरेशन के दौरान जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, ये इसको यहीं पर रिड्यूस कर देती है और नियर बाई एरिया में जो है वो वाइब्रेशन बहुत उसका कम इफेक्ट जो है वो ट्रांसफर होता है। दिस इज अगेन metallic springs which are provided in an air conditioning plant mounted on the top of a building. Similarly, here an example in a field example is shown, and probably this is you can see this red rubber layer which is provided below the sleepers, which is supporting rail track, and probably this is installed in Germany. So when the train passes on it, it produces impact loading, dynamic forces in the vertical direction, and this red rubber layer reduces those dynamic forces, and only a fraction of dynamic forces is transferred to the ballast below, and consequently that we get we arrive at economical design. तो ये रबर लेयर जब हम प्रोवाइड कर देते हैं, इसका फायदा ये चूंकि वाइब्रेशन आइसोलेटर का काम करती है, तो जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है तो जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डायनामिक फोर्सेस प्रोड्यूस करती है ये उसको रिड्यूस कर देती है, और डायनामिक फोर्सेस का काफी कम पोर्शन नीचे ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से नीचे जो इसकी जो फाउंडेशन है, बेलस्ट है, उसमें आप वीकल मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं और यू कैन अराइव एट एन इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट. Similarly, as earlier mentioned, these special types of pads are provided between the bridge girders and the piers. When the traffic pass on bridge deck, it produces dynamic forces horizontally as well as vertically. These rubber layers reduce the dynamic forces exerted in the vertical direction, and only a fraction of those dynamic forces are transferred to the piers. Consequently, we arrive at economical design. So I think this is enough for today. If you have any question, you can ask. तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अपना लेक्चर.